Hello everyone, good afternoon and welcome to our live online Science Day celebration from IISER Pune. इस अभी का जो सेशन है उसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग और जीनोम्स के बारे में चर्चा करेंगे and in this session we'll have Dr. Soman, who is a project coordinator in Genome facility at IISER Pune, and also Dr. Krishnamal Kamodia, who is a faculty in IISER Pune in biology department, to help us understand about DNA furthermore. बट स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में सोचेंगे और डीएनए के बारे में बात करेंगे कि whenever we say DNA, the first thing that comes to our mind is images like these, that DNA is the blueprint of life. It stores a lot of information, and usually if you ask anyone what DNA looks like, they will point at an image like this, that DNA looks like a double-stranded helix. And sometimes we all have seen these images that DNA looks like a double-stranded helix, but इट ऑल्सो पोर्ट्रेज अ मिसकंसेप्शन कि हमें लगता है कि डीएनए एक रिबन जैसा है, एक डबल स्ट्रैंड, दो रिबन्स है जो एक दूसरे पे घूमते हुए जा रहे हैं. बट एक्चुअली डीएनए इज नॉट अ रिबन, इट्स नॉट अ स्ट्रैंड. डीएनए इन थियोरी इज अ वेरी बिग केमिकल. Okay, so when we say chemical, we often think about these structures that we draw in a book, और हम केमिकल की तरह डीएनए को नहीं देखते because we think that DNA stores, is the blueprint of life, it stores information. पर अगर हम डीएनए का असली स्ट्रक्चर देखें तो दिस विल बी मोर लाइक अ एक्चुअल स्ट्रक्चर और ओवरलैप ऑफ दैट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड द केमिकल्स दैट एक्चुअली मेक अप द डीएनए. एंड इफ यू लुक एट द एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, जिनसे डीएनए बना हुआ होता है, उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. और डीएनए की खासियत जो है, दैट वी ऑलवेज नो अबाउट इट, दैट डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन. हाउ डज डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन? इज डीएनए के पास चार तरह के केमिकल्स होते हैं, या फिर चार तरह के केमिकल्स से डीएनए का इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाली जगह बनी रहती है. दीज फोर केमिकल्स आर कॉल्ड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. और ये जो चार केमिकल्स है, ATGCB जिसे कहा जाता है, these chemicals actually are like letters of our English language or any other language. And as in language, how the letters may not have a meaning of their own, but जब आप कुछ letters को साथ में जोड़ते हो तो उसका एक meaning आ जाता है. If I just give a simple example कि अगर हमने D, G और O ये तीन ही letters लिए, तो उन्हें arrange करके मैं DOG dog भी बना सकता हूँ, या फिर उन्हें ही arrange करके मैं GOD God भी बना सकता हूँ. So letters by themselves may not have a lot of meaning, but sequence of these letters actually ends up having meaning. और डीएनए का ये जो मीनिंग है, ये पढ़ने का काम किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हमें और एक चीज के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि डीएनए में ये जो चार बेस पेयर्स है, ATGC, they actually bind with each other. So A binds with T and G binds with C. तो इस तरीके से if we know sequence of one DNA strand or one DNA molecule, we can predict the sequence of what its complementary or what its पार्टनर डीएनए विल बी लाइक. सो अगर मेरे पास ए ऐसा डीएनए है तो उसका सीक्वेंस टी ऐसा होगा, या फिर अगर मेरे पास ए जी ऐसा है तो उसका सीक्वेंस टी ऐसा होगा. सो जस्ट बाय नोइंग दिस आइडिया दैट ए पेयर्स विद जी एंड ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी, वी कैन गेट टू दिस आइडिया ऑफ हाउ टू नो मोर अबाउट डीएनए. And we are talking about DNA as chemical and how we see DNA in textbooks, but in lab when people work with DNA, it looks very different, and they do very different processes with DNA to understand more about it and learn the sequence of DNA. तो इसके बारे में जानने के लिए I will request Soman to tell us more about it, that how does DNA actually look in a lab? So obviously, I mean, you know, in textbooks you will find that DNA is a double helix structure, and it actually is. When you are looking at a very microscopic level, it is. But when we are working in the lab, we don't see it as a double helix. What we see is just a small container where there is a solution where your DNA is dissolved. So basically DNA is soluble in water. So we work with those kinds of things, and when you compare it with any other solution, say just water itself, you won't be able to tell the difference. If the DNA looks more like a solution, how do we know कि जो सैंपल मेरे पास है उसमें DNA present है और उस DNA का साइज क्या हो सकता है, और how do we know more about this DNA which is present in a solution? Right. So I mean, definitely you would want to know that the solution that you are working with
actually has your DNA. So the principle that is exploited here is basically you have some kind of dyes which you can allow them to bind to DNA, and depending on the fluorescence they give out, you can understand. So what happens typically is DNA is negatively charged, and जब आप उसको जब आप उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सो DNA ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. अभी डिपेंडिंग ऑन कि आपका DNA कितना बड़ा है या फिर छोटा है या फिर कैसे फ्रैगमेंट्स है आपको, और आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं एक लैडर के साथ, विच इज काइंड ऑफ शोन इन द फर्स्ट लेन हियर. एंड depending on where your DNA is found, if you see that it is found at the suitable length, then you can be sure that ये सही है DNA जिसके साथ आप काम कर रहे हैं. Now that we have seen that DNA is present in my solution by this electrophoresis or gel electrophoresis method, how would we go about knowing the sequence of these nucleotides or actual sequence of the DNA? Right. So obviously ये अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, but there is this particular technology which is the DNA sequencing technology. Now one thing to make sure is that the basic principle is the same, कि DNA, which is, as you must already know, made up of 4 base pair: adenine, guanine, ATGC, guanine, thymine and cytosine. And जैसे हम जानते हैं कि A binds to T and G binds to C, right? तो अगर आपके पास सोचिए एक स्ट्रैंड ऑफ DNA है और आपको पता करना है कि इसका सीक्वेंस क्या है, सो व्हाट टिपिकली इज डन इज कि आपके पास ATGC मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको सोचिए कुछ कलर के साथ अटैच कर दिया गया है. नाउ जैसे ही आप ये ATGC मॉलिक्यूल्स को आपके DNA पे डालेंगे, वो जो स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रैंड ए या फिर ATA ऐसे है, तो उसके अगेंस्ट जाके T बैठेगा, A बैठेगा, C बैठेगा, G बैठेगा, ऐसे करके. सो यू विल गेट टू नो द ऑपोजिट स्ट्रैंड, and you will have cameras which will functioning in a way so that जो भी कलर बैठ रहा है वो आउटपुट देगा. एंड जिस हिसाब से सोचिए रेड ब्लू ग्रीन येलो ऐसे कलर से, तो अगर रेड ब्लू ग्रीन येलो आया तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, कुछ और आया तो कुछ और होगा. सो इस तरह से आपको आपका जो DNA है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाएगा. एंड जैसे ही इसका सीक्वेंस पता चल जाएगा आपको आपके स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाएगा. So you mentioned there are these machines which actually do the DNA sequencing for us. What are these machines and what do they do exactly? So this kind of technology, sequencing, the DNA sequencing technology, when you go deep into the mechanics of it, what happens is it has a camera and it has an automated system where it keeps on pumping your bases which go and attach to your DNA, and as and when they are attaching to your DNA, the camera keeps on capturing what kind of fluorescence are coming up. So depending on the sequence of the colored fluorescence that it captures, you are able to understand this DNA. And let me tell you that this is not just a very small length का thing, this is a very high throughput thing. मतलब आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस को एक साथ एक ही बार में 5-6 घंटे में आपको पता चल सकता है कि क्या क्या सीक्वेंस था उसके साथ. सो दिस इज वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ. So as you said that there are DNA sequences, so we can know the sequence of individual strands of DNA, but in our body a lot of DNA is present, and we have also seen that DNA makes up genes, and these genes are present inside the cell. So how do we know about knowing sequence of big DNA molecules? ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका जो बेसिक एंटिटी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, ठीक है. नाउ व्हेन यू आर सीक्वेंसिंग सम पार्ट्स ऑफ द DNA, धीरे धीरे यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका जो जीन का सीक्वेंस क्या है. फॉर एग्जांपल जो जीन स्किन बनाता है या फिर कोई और चीज़ बनाता है उसका सीक्वेंस क्या है. एंड ऐसे अगर आप सारे जीन्स का सीक्वेंस कर पाए तो आप
जैसे हर एक इंसान का या फिर कोई एक दूसरे ऑर्गेनिज्म, बटरफ्लाई हो या फिर मॉथ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका आप जीनोम आर्किटेक्चर जो है आपको पता चल सकता है. एंड जीनोम आर्किटेक्चर से आप बहुत कुछ, I mean there is like just a wealth of information there in genome architecture. So उससे आपको काफ़ी सारी information मिलती है. So this is the reason why it's very important कि हम sequencing of DNA is very important for these particular reasons. So since he mentioned the word genome, the idea is that the DNA, all of DNA present in an cell is called the cell's genome. And to know more about genome and how the DNA is stored in our cells and how do we know or what can we know about knowing the whole sequence of a genome, let's go to Dr. Krishnapal Karmodia and he will tell us more about the genome and how sequencing is done for the whole genome. Right. So जो DNA है, as we know, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं A, T, C, G. उनका जो सीक्वेंस होता है, जो जीनोम कॉन्स्टिट्यूट करता है इवेंचुअली, उसका जो अरेंजमेंट है, that is what is actually an important aspect of genome and genome sequencing. Now ये जो information है, it's almost like a very detailed blueprint for our entire body, and it's, if I have to take some analogy, it's almost like a very detailed book. For example, this book, and it has incredibly detailed information of each and every cell type in our body. We can also use this book to actually go back. It can be also used as a history book, basically, which can narrate the journey of our speciation through time. And people who are interested in future, for them it has all the information of how our genome information can be used to decode how susceptible we are for some particular diseases. For example, by looking at this book and by going through the genome structure, we can find out if we are susceptible for a particular kind of cancer, and that is what can be read by genome sequencing. Interestingly, in our body, all cells have same genome, but they work differently based on how this genomic information is read. So you mentioned all cells in our body have the same genome or the same set of DNA, but how do they differ? Like, how do they do different functions from each other? In our body, there are like some 200 different kinds of cells. There are blood cells, there are eye cells, nerve cells. They all have same genome, but जो उनका पढ़ने का टाइमिंग है और जो तरीका है वो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल हैव सीन द बटरफ्लाई, राइट? बटरफ्लाई में एग्स होते हैं, कैटरपिलर होती है, प्यूपा एंड द बटरफ्लाई स्टेज. जो एग्स है उसके अंदर ऑल द इंफॉर्मेशन है कि हाउ द बटरफ्लाई विल फॉर्म, विच कलर इट विल हैव, बट दैट इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन सप्रेस्ड फॉर्म. सो उसका जो डिकोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एंड द टाइमिंग ऑफ द जो एक्सप्रेशन है इस इंफॉर्मेशन का, that is what is also controlled by this particular book. So it has all the information, not about the present, not about the past. It has also information about the future and the timing of all this decoding of genetic information. So with that book analogy, we can say that the genome is like a book which knows how to read itself. But how do we read the genome, or how do we sequence the genome and get the information from it? So जो DNA sequencing है, it was developed long back in 1977 or so. It took really long time to learn page by page and single information. So for example, it took 17 years to sequence one human genome, and it cost us around $15 billion. But now with the advancement of technologies, we can't read still entire book in one go, but what we can do is we can just shred this book information into smaller pieces like this, and then हम लोग इसको वापस जाके, चूंकि हमारे पास ये information available है, हम लोग we can always go back and put this information back. Now because we have a reference genome, so called this book, and this shredded information, which is a information which we don't know completely, हम लोग जाके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से म्यूटेशंस और चेंजेस इस इंफॉर्मेशन में है जो कि इससे मैच नहीं कर रहे हैं. और इस तरीके से हम लोग कोई सी भी जीनोम को आज एक दिन में और almost in $1,000 we can get the human genome information in 24 hours. So the advancement in this sequencing technology has been happening for last couple of decades. So what is the latest thing in genome sequencing? What is the latest technology or advancement that has happened in genome sequencing? So
जो जैसा मैंने मेंशन किया 1977 में जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था सीक्वेंसिंग, उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया श्रेड करके जीनोम को, इसको हम लोग इसमें मल्टीपल सीक्वेंसिंग, मिलियंस ऑफ सीक्वेंसिंग एक साथ होती हैं, इसलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है, जिसमें डिवाइसेस आर एज बिग एज दिस and they're actually smaller than our mobile phones. So you can take these devices, connect them with your laptops, and you can get the genetic information in few hours now. So that has really transformed the way we look at genomes, particularly the medical aspects of it. We can now identify any infection or any organism just by doing genome sequencing. We don't have to begin with have to have this genome reference genome. We can also just take this threaded information and put them together. It might not be as good as the story what we have in this book, but we can still get the information just by the unknown samples also. Would you tell us about how genome sequencing is causing a lot of impact on other areas? Maybe say COVID has how does it help us with this COVID situation, and what are the new things happening in genome sequencing? Particularly, COVID has transformed our lives in multiple different ways. One thing it has done is also to bring the genome sequencing at the forefront. Now people have learned the importance of single change or mutation or variants what we read in newspapers, and how they can be important in determining the consequences associated with a particular disease. So आज हमें पता है कि अगर एक सिंगल म्यूटेशन भी होता है तो कैसे वेरिएंट जो होता है वायरस का वो कितना सीवियरिटी या डेडलियर हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर चेंज से आज हम देखते हैं कि जीनोमिक्स जो है वो बहुत सारे जो लाइफ साइंस के पर्टिकुलर फील्ड हैं उसमें इसने यूज होने लगा है। वी सी इट इन medicine genomics, we see it in metagenomics. You can also go back and based on the fossil genomes, you can actually research the ancient genomes. You can also see how they were looking actually by just looking at their genome. People are doing now population genomics, agri-genomics, pharmacogenomics. So there is a huge so-called genomics era is now just it's coming now, and we'll see it soon. Even as a science student, we are always fascinated by this idea of DNA sequencing and the whole genome of an organism being sequenced. So for our viewers who are science students, would you like to tell us what to study or what areas to follow if you want to get into this idea of genome sequencing? Right. So जो ये divisions हैं metagenomics, population genomics, agri-genomics, so ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, साइंटिफिक क्वेश्चन है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो एक सिंपल मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स इज दैट go back to the basics, learn the biochemistry and the molecular biology of DNA and the DNA sequencing. The basic principle is going to be same in all these methods, and that is what is very important. You can develop your own method, you can come up with your own startup based on new method you develop if you know the biochemistry and the molecular biology of DNA. Thank you, Krish, for the wonderful information, and I hope all of our viewers learned a lot of new things from this session. And I request all of you to check in the description for more links related to genomes and genome DNA sequencing, which we'll try to put in the link description of this video. And please enjoy the rest of the videos in the Science Day celebration. Thank you.